Assalamualaikum friends, today I'm sharing low calorie beef burger with tangy slaw and creamy sauce. Note the ingredients of sauce. For sauce, you need a big bowl and add light mayonnaise, then add chopped garlic, parsley, paprika, then add hot sauce, थोड़े पिकल्स भी इसमें हम शामिल कर देंगे, then add cream, और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। नोट द इंग्रेडिएंट्स फॉर स्लॉ। First of all, you need to cut thin slices of red cabbage. इसको किसी भी जार में आप ऐड कर लें, मेरे पास यूनिटेला का है। अब मैं इसके अंदर सारा ये हमारी ऐड कर लूँगी। Then you need to add salt, sugar powder, vinegar, olive oil and lemon juice. इसको लिड बंद कर अच्छे तरीके से शेक करना है और ये रेडी हो गया है। इसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं for 7 to 8 days के लिए। Then you note fatty ingredients. In a bowl, you add beef mince, then add black pepper, salt, and chopped garlic. इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब एक बटर पेपर में हम इस तरीके से इसको बनाकर रख देंगे और अब इसको सारी तरफ से हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। इसको थोड़ा थिन करेंगे कि ये थोड़ी फ्लैट हो जाए। स्लाइटली प्रेस करेंगे मिडल से ताकि ये सॉफ्ट बने। अब हम ऑलिव ऑयल का इस तरीके से स्प्रे करेंगे हमारे पैन पे। ग्रिल पे भी आप इसी तरीके से इसको स्प्रे कर दीजिए। अब हम पैटी को रखेंगे और 5 मिनट्स के लिए ईच साइड से पकाएंगे। इसको हमें बार बार फ्लिप नहीं करना है, अदरवाइज ये टूट जाएगी। और अब ये रेडी हो गई है। You need brown bun, then cut horizontally. It's time to assemble the bun. अपने बन के ऊपर हम इस तरीके से सॉस को स्प्रेड करेंगे
अब हम लीफ को इस तरीके से रखकर बर्गर पैटी इसके ऊपर हम सर्व करेंगे। Then you add slaw, और अब अगेन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सॉस ऐड करेंगे और फिर इसको आप सर्व करें। It's yummy and great option. You can check my page for more weight loss recipes. Thank you for watching.